माइसेल कंसंट्रेशन CMC कैसे डिटरमिन की जाती है? इसको डिटर्मिनेशन करने के पीछे जो प्रिंसिपल है वो ये है कि क्रिटिकल माइसेलरी कंसंट्रेशन के अचीव होने से पहले जो प्रोसेस होगा वो एड्जॉर्प्शन होगा, और इसके अचीव होने के बाद यानी इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद जो प्रोसेस होगा वो सिर्फ माइसेलाइजेशन होगा। एक वक्त में दोनों प्रोसेस नहीं होते, एक वक्त में दोनों प्रोसेस नहीं होंगे। जब A स्टेज पर होगा तो एड्जॉर्प्शन डोमिनेट करेगी, जब C स्टेज पे होगा तो मेरे जो माइसेलाइजेशन है ये डोमिनेट करेगी। यहाँ पर माइसेलाइजेशन अगर है भी तो इतनी कम है कि वो नज़र ही नहीं आएगी, और यहाँ C स्टेज पर एड्जॉर्प्शन अगर हो रही है तो इतनी कम हो रही है कि वो ऑब्जर्वेबल नहीं रहेगी। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर वो ये कि जब एड्जॉर्प्शन हो रही है तो सरफेस के ऊपर कोई चेंज आ रहा है, जब माइसेलाइजेशन हो रही है तो सरफेस के ऊपर अपेरेंटली कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर मॉलिक्यूल एक डिज़ॉल्व होकर वापस सोल्यूशन में आता है तो सोल्यूशन से भी एक मॉलिक्यूल वापस जाकर एड्जॉर्ब हो जाता है। सो ओवरऑल द सैचुरेशन पॉपुलेशन ऑफ द इंटरफेस रिमेन्स कांस्टेंट। एज अ रिज़ल्ट व्हाट हैपन्स कि मेरे पास जो सरफेस एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना है वो पॉइंट C के ऊपर कंट्रीब्यूट नहीं करता। सो A पॉइंट में जितने मॉलिक्यूल्स हम बीकर में डालेंगे सब सरफेस पे जाकर एड्जॉर्ब होंगे। B वो पॉइंट है जहाँ पर सरफेस पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब प्रोसेस ने स्विच करना है फ्रॉम एड्जॉर्प्शन टू माइसेलाइजेशन। C वो प्रोसेस है जहाँ पर सरफेस एड्जॉर्प्शन ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड है, अब इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, सिर्फ माइसेलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, और सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं बाय मेजरिंग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है जो कि हम इजीली एक लैब में एक्सपेरिमेंट के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। सरफेस टेंशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस। जब तक इस सरफेस पर चेंज आती रहेगी सरफेस टेंशन की वैल्यू में चेंज आती रहेगी। जब इस सरफेस पे चेंज आना बंद होगी इसकी वैल्यू में चेंज आना बंद हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट हम इस फैक्ट को एक्सप्लोर करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द क्रिटिकल माइसेलरी कंसंट्रेशन। हम क्या करते हैं, हम सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और बहुत लो कंसंट्रेशन पर भी और बहुत हाई कंसंट्रेशन पर भी पूरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन लेते हैं, और फिर सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ surface tension will be plotted on the y-axis and one complete plot will be generated. Within this plot, in going from point A to point B, before जिसे हम कहते हैं before CMC achieve होने से पहले वाला हिस्सा, there will be the change in the surface tension because the process that takes place before CMC is the process of adsorption, and the adsorption brings the change in the surface, and this change in the surface brings the change in the value of the surface tension. After CMC, there is no change in the surface. As a result, there is no change in the value of surface tension. So, in going from A to B, the value of surface tension varies, and after B to C, after micellization process, there is no change in the value of surface tension. So, when there is a shift in the trend of the surface tension before critical micellar concentration and after critical micellar concentration, this shifting point is labeled or marked as CMC. This is the critical concentration of the surfactant below which there is no micellization and above which there is all micellization. So, this point or this value is called critical, the minimum concentration required to form micelle. Remember that micellization will not start until or unless the complete monolayer formation is achieved on the surface. Now, the next question is whether the surface tension is the only property that can determine the critical micellary concentration. The answer is no. Other physical properties
that are either the properties of the surface or the properties of the bulk liquid can be explored to find out the surface tension. These properties include conductivity, turbidity, osmotic pressure, molar conductivity, and so on. In the surface tension, before adsorption, before micellization, the adsorption takes place, the value of surface tension changes, and after micellization there is no change in the surface tension. Whereas, in case of turbidity, there is least or no change before the critical micellary concentration, and there is an immense change in the turbidity. Once the micelle has started forming in the beaker, there is abrupt rise in the turbidity of the solution, because the micelles are responsible for making the solution turbid. As a result, greater the number of the micelles, greater is the turbidity. So, the turbidity rise pattern changes when the CMC has achieved or micelle formation has started. Similarly, in case of osmotic pressure, before CMC and after CMC, the pattern of the change of the osmotic potential is different. Same is the case with the conductivity, because the conductivity of micelle is different from the conductivity of individual surfactant molecule. So, how can we determine the CMC? By measuring the viscosity. Viscosity is the bulk phenomena that belongs to the solvent bulk. Okay. Micelle, okay. Viscosity, when the micelle will start forming, the viscosity will change abruptly. Before micelle formation, there will be only slight change in the viscosity. Similarly, osmotic potential, electrical conductance, refractive index, intensity of scattered light, turbidity, capacity to solubilize the hydrocarbons, and also we can measure the critical micellary concentration by measuring the small angle X-ray scattering techniques as well as from NMR. So, the types of micelles that are used in biological system include cell membrane, spherical micelles, they form liposomes. There is a difference in spherical micelle and liposome, and that is the micelle is a spherical structure, whereas the liposome is lamellar micelle that has been arranged in the form of a sphere. Some inverted micelles are used in emulsion polymerization as well as they are used for other processes as well. The regular micelle size is 30 to 50 surfactant molecule. Sometimes the structure of surfactant gets complexed, where the two surfactant or the two head to tail structure are linked to each other covalently, or they may have a linkage at their tail end, or the surfactant they themselves may get polymerized through their polar head to form a big polymer with multi-dentate non-polar heads tails associated with it, or they can form the di-block copolymer surfactant. These all are the structures of complex surfactant molecule. These are not micelles, these are complex surfactant because each of them is one molecule of the surfactant. When they will form micelle, they will just physically align together, and when they form the complex surfactant, they are covalently bond with each other. So, summarizing the whole lecture, today we have learned that surfactants are surface active agents. We have learned about the nature of the surfactant, the main properties of the surfactant, their types as well as their application. I hope that this lecture will have added to your knowledge about surface active agents, their properties as well as different role they perform in our lives. In the next lecture, we will come up with a new topic. Take care of yourself till then. Thank you.
अल्लाह हाफिज़।